But at the same time, we have also seen acts of courage of selfless human beings who have worked hard to save lives, who have responded to the crises that engulfed us over the past 2 years and continue to do so today. At last year's dialogue, as we all signed on to Raisina on our screens, Prime Minister Modi made a very perceptive and important observation. He noted that global institutions created in the 20th century to prevent wars had failed to anticipate the challenges of the 21st century and were unable to protect us even from basic threats. He suggested a new imperative to build institutions that respond to essential human concerns from famine to hunger to disease. Our continuing inability to respond equally and equitably to the pandemic and what happened thereafter underscores the point the Prime Minister made. We need to refocus, re-engage, and reset our institutions of global governance. Nor have the disorders of the 20th century failed to trouble us in the 21st. Political challenges have marred the past year in the Himalayas and the Hindu Kush, in the Indian Ocean and the Black Sea. Here again, the responses of the institutions created in the past century have been found wanting. We meet today in person, but for many of us, life over the past years moved online. We relied on technology to earn a living, to stay connected with friends and family. And yet, this life-giving online world itself became a new battleground. Infodemics, cyber attacks, online frauds. As our lives became virtual, so did our threats. Our worst fears followed us online. Yet, honored guests, one fighting force has remained undaunted. Communities. Communities responded magnificently. A globalized, individualistic world had to re-anchor itself in communities. When the rest of the world was put beyond our reach, we rediscovered the importance of our families, of our neighbors, of our cities. We remained global, but the essential realities of our localities returned. Today, as we deal with geopolitical headwinds and uncertainty in the supply chains, with the weaponization of financial systems, wars fought with energy, we at Raisina today have a responsibility. This is the first conference that has the opportunity to engage with these issues and many more. The first opportunity to sit together, to look back in order to look forward, to collectively determine a clearer path forward. We are delighted to have speakers and participants from 100 countries in person and many more joining us online. They represent a kaleidoscope of ideas and ideologies, a mosaic of aspirations and ambitions. That is this dialogue's uniqueness and its strength, and you, the community, are its pillar. Honorable Prime Minister, you may recall that when we first discussed this dialogue with you years ago, you said focus on the young, on those who will shape our shared future. This year, our 44 Raisina Young Fellows from approximately 28 countries join the 1,500 alumni from 109 countries that have been through this fellowship program. This year, we also have 2 Bhutanese colleagues joining them, along with the officer trainees from the Foreign Services Institute, who will be a part of these proceedings as well. And soon, we are going to welcome to the Raisina family a Future Diplomats Forum, whose alumni will, through their actions and careers, answer many of the questions we will ask ourselves in the days ahead. There are conversations that are hosted in Delhi, but there are also conversations happening in Washington, D.C., and indeed in Berlin this time around. Hopefully next year, we will also have an in-person gathering in Canberra. The Raisina dialogue will follow the sun in search of solutions to the most pressing questions that unite humanity. Let me welcome you all once again to New Delhi and thank our special dignitaries for agreeing to inaugurate this session today. With that, let me invite Mr. Sanjay Joshi, Chairman of the Observer Research Foundation, to introduce the program and indeed our speaker this evening. Mr. Joshi, over to you. Good evening and a very warm welcome to the distinguished gathering assembled here in this room once again. We are assembled in person
after a hiatus of 2 years. Last year was an online forum when we gathered together at the Raisina Dialogue in front of our computer screens. So, very good evening, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Her Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission and our chief guest for this evening, Honorable External Affairs Minister Mr. Jaishankar, partners from the Ministry of External Affairs, ministers, admirals, delegates, experts gathered from 100 countries, and our young Raisina fellows in this room. We host this year the Raisina Dialogue, I must confess, with some trepidation. Now, this dialogue was created as a venue for conversations between global statesmen, thinkers, leaders across politics, government, businesses, media, civil society, you name it, a vast array of expertise to bring it together in the rooms of the Taj Palace. I speak with trepidation because even as we were battling to recover from the devastation struck by this once-in-a-century pandemic, we were also struck by two other bolts which just came out of the blue. The first saw a dark veil descend over Afghanistan in our neighborhood. That was August 2021. And the second has just redrawn the Iron Curtain across the heart of Europe. The Raisina Dialogue 2022 takes place in the lengthening shadow of these events. And our theme for the year, Terra Nova, impassioned, impatient, and imperiled, seeks to interrogate our responses as a global community to all three watersheds. We endeavor to discover how we find ourselves today on a rather unfamiliar planet that looks and feels very, very different from the one we had gathered to discuss in person just before the pandemic struck in 2020. Have we moved forward in these 2 years only to go back? Just as the collapse of Kabul in 2021 was seeking to signal a new geoeconomic architecture that sought to respond to the strategic competition of the 21st century, February 24th threw us back into the old bipolar global order of a bitter Cold War that the world should have relegated to history books 30 years ago. And together, the pandemic, Kabul, February 24th, these three events today force us to examine the political undergirding of what has become a rapidly deglobalizing world. The cracks in the multilateral liberal system are now tectonic rifts. And if history is any indication, such a confluence of event chains coalescing together can alter global power dynamics and reshape the world order. And that is the kind it's been spoken of as inflection point, and that is the reason. Now, a pandemic that should have brought us together ended up exposing the limits of transnational cooperation. We divided the world into the haves and the have-nots. We recreated the rifts which we had again forgotten between the North and the South. It made us acutely aware of the frailties of global public goods, of supply chains, of global institutions. Large tech companies gained influence across a multitude of sectors, from financial services to healthcare, and regulators were struggling to keep pace. Authoritarian states perfected the use of technology for controlling lives, and technology itself spawned a new generation of deep fakes that brought us to the post-truth era. Our health, our safety, our well-being are all become part of someone else's business model. We don't control them. And the sanctions following the conflict in Ukraine now undermine trust in the integrity and the cohesiveness of the global financial system, which was once considered the backbone of global value chains, of global innovation. And climate action, unfortunately,
has been reduced to trending hashtags and empty speeches, even as the taps of green finance and green technology continue to run dry. So we are in the midst of a perfect storm, and our assumptions are shaken. It is no longer the time to hark back to a pre-pandemic normal. It no longer exists. The riddled as that normal was with inequality and exclusion, this is the time for a new, unknown world. A time to talk coherently about what is substantive, what is sustainable, and thereby make the right choices. And this is the challenge right here for all of us in New Delhi at Raisina 2022. The war in Ukraine sadly continues, but we believe so must this dialogue that gathers diversity across 100 countries and gives us perhaps some reason for hope. Madam Excellency, there's no better way to commence these conversations at the Raisina Dialogue than to have you here to deliver tonight's inaugural address. I recall welcoming you to the ORF in 2015 as a Minister of Defense, then of the Federal Republic of Germany, and today it gives me even greater pleasure to have you as the Chief of the European Union. Madam, the floor is yours. Prime Minister Modi, Excellencies, Ambassadors, distinguished guests. Every 5 years, when Indians are casting their vote in parliamentary elections, the world watches with admiration as the world's largest democracy charts its future path. Because the outcome of decisions made by 1.3 billion people resonates around the globe. This is especially true for Europe. As vibrant democracies, India and the European Union share fundamental values and common interests. Together, we believe in each country's right to determine its own destiny. Together, we believe in the rule of law and fundamental rights. And together, we believe that it is democracy that best delivers for citizens. So, despite our geographic distance and despite the different languages we speak, when we look at each other, we do not meet as strangers, but as close friends. Democracy was born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home is India. For the European Union, strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition. And we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and open Indo-Pacific. Both our regions are driving forces in the digital revolution, and this makes us natural partners in setting global standards to make sure that the rules of the analog world also count in the digital domain. And of course, both India and the European Union are key in the transition to a more sustainable and green future for our planet. So we must pool our strength in the fight against climate change. It's so urgent. And this is our common responsibility, not only towards the global community, but mostly towards the next generation. However,
our values are not shared by everyone. We all see the rising challenges to our open and free societies. This is true for the technological and the economic domain, but it is also true for security. The reality is that the core principles that underpin peace and security across the world are at stake, in Asia as well as in Europe. The images coming from Russia's attack on Ukraine have shocked and are shocking the whole world. 2 weeks ago, I visited Bucha, the suburb of Kyiv, which was devastated by Russian troops as they withdrew from the north of Ukraine. I saw with my own eyes the bodies lined up on the ground. I saw the mass graves. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. I saw the scars of bombed schools and resident houses and hospitals. These are severe violations of international law, targeting and killing innocent civilians, redrawing borders by force, subjugating the will of a free people. This goes against core principles enshrined in the UN Charter. In Europe, we see Russia's aggression as a direct threat to our security. We will make sure that the unprovoked and unjustified aggression against Ukraine will be a strategic failure. This is why we're doing all we can to help Ukraine fight for its freedom. This is why we immediately imposed massive, sharp, and effective sanctions. Sanctions are never a standalone solution. They are embedded in a broader strategy that has diplomatic and security elements. And this is why we have designed the sanctions in a way to sustain them over a longer period of time, because this gives us leverage to achieve a diplomatic solution that will bring lasting peace. And we urge all members of the international community to support our efforts for lasting peace. And if we consider what it means for Europe and Asia, that Russia and China have forged a seemingly unrestrained pact, they have declared that the friendship between them has no limits, that there are no forbidden areas of cooperation. This was in February this year. And then the invasion of Ukraine followed. What can we expect from the new international relations that both have called for? Ladies and gentlemen, this is a defining moment. Our decisions in these days will shape decades to come. Our response to Russia's aggression today will decide the future of both the international system and the global economy. Will heinous devastation win, or humanity prevail? Will the right of might dominate, or the rule of law? Will there be constant conflict and struggle, or a future of common prosperity and lasting peace? What happens in Ukraine will have an impact on the Indo-Pacific region. It already has. Countries battered by 2 years of COVID pandemic must deal now with rising prices for grain, energy, and fertilizers,
as a direct result of Putin's war of choice. Thus, the outcome of the war will not only determine the future of Europe, but also deeply affect the Indo-Pacific region and the rest of the world. For the Indo-Pacific region, it is as important as for Europe that borders are respected and that spheres of influence are rejected. We want a positive vision for a peaceful and prosperous Indo-Pacific region. The region is home to half of the world's population and 60% of the global GDP. Our vision is that the Indo-Pacific region remains free and open and becomes more interconnected, prosperous, secure, and resilient. With an open and rules-based security architecture that serves all interests. To this end, we will deepen our engagement with our partners in the region, including ASEAN. On China, we will continue to encourage Beijing to play its part in a peaceful and thriving Indo-Pacific region. The relationship between the European Union and China is simultaneously strategically important and challenging. All at once, China is a negotiating partner, an economic competitor, and a systemic rival. We will continue our multifaceted engagement. We will continue to cooperate on tackling common challenges, and we will protect our essential interests and promote our values. And on this foundation of engagement in the Indo-Pacific region, we seek to build a new common agenda for the 21st century. One major item on this agenda is the need around the world for massive investment to overcome the fallout of the COVID pandemic and to modernize their economies. And as a consequence, some countries have been forced to take unsustainable offers. They face a situation where they do not fully control their own infrastructure, be it seaports or airports, be it bridges or railways. But investments in our future should never come at the expense of a country's independence. Throughout the 2020s, developing Asian countries will need to invest more than 5% of their gross domestic product to meet the infrastructure needs of their own fast-growing economies. This means globally over $1.7 trillion per year. The needs are massive, but so are the opportunities. This is why we have introduced Global Gateway. Global Gateway is Europe's vision for investment in clean and sustainable global infrastructure. Global Gateway will enable up to 300 billion euros to support major infrastructure priorities around the world. From clean energy to digitalization, you name it, our offer will be transparent and values-driven. With Europe, what you see is what you get. And let me focus on specifically 2 points. First, on climate action. And here, let me take energy. Energy demand, for example, in India, has doubled since 2000. And this is good news, because it means better living conditions for millions of people. Over the next 20 years,
India will need an additional energy capacity that is equal to the entire European energy consumption, additional. So the question is, will this energy be clean? Or will it poison our air that we breathe? Will the energy be renewable and homegrown? Or will it increase our dependency and allow for blackmail in the future? I was very glad, Prime Minister, to hear that you declared that India will be energy independent before it celebrates its 100th birthday of the country's independence in 2047. So the choices made today are crucial, not just for this great nation, but for the whole world. Global Gateway could bring, for example, to India and Bangladesh more hydropower produced in Nepal and Bhutan. It could build clean hydrogen infrastructure to power up your heavy industries. Just yesterday, I visited the headquarters of the International Solar Alliance. This is a great partnership launched by Prime Minister Modi and now bringing together 86 countries. So it's innovation at the service of people, because the International Service Alliance will benefit most the least developed countries and the small island developing states. And given the geopolitical and climate challenges we face, the business case today for solar is stronger than ever. So we should massively scale it up also through Global Gateway for the benefit of our common prosperity and the planet we all share. We also can help the climate when saving energy. I know this sounds obvious, but in a country the size of India, the sum of many small individual decisions can have a tremendous overall impact in the end. Just think of this example. As prices drop dramatically, in recent years, millions of Indians switched from using traditional old light bulbs to modern LED lighting technology. This resulted in annual energy savings of 30 terawatt hours. This is roughly enough to power 28 million average Indian households for a year, just by saving, or for the whole of Denmark, just through saving energy. So there's really big time potential in energy efficiency and energy savings. We also need to strengthen our cooperation in the digital field. This is my second point. Because cutting-edge technology is at the heart of our future cooperation. And Asia is a powerhouse when it comes to new technologies, from artificial intelligence to quantum computing. Our cooperation is about more than investment and infrastructure. It is about talent and technology based on fundamental values, on standards, for example. Today, India and the European Union both recognize that we are better off when we develop global standards for new technologies such as 5G, instead of seeking separate national solutions. And we share many of the same values when it comes to the digital world. We share the idea that privacy should be guaranteed online as well as offline, and that technology should enhance individual freedom, not the state's ability to control us. Think about data protection. European companies outsource many of their IT processes to Indian companies
Europe generates almost 1/3 of the revenues for the Indian business process outsourcing sector, and with equivalent rules, we could unlock even greater data flows between our regions with immense benefits for the companies in our respective regions. As I said earlier, for the European Union, the partnership with this region is one of our most important relationships for the coming decade, and strengthening this partnership is a priority for the European Union. Our strategic cooperation should take place at the nexus of trade, trusted technology, and security, notably in respect of challenges posed by rival governance models. And therefore, I am very pleased that today Prime Minister Modi and I have agreed to establish an EU-India Trade and Technology Council to tackle key trade, economic, and technological challenges. And as like-minded partners, the European Union and India will be working on several tracks. We have launched negotiations on a free trade agreement, as well as on investment protection and geographical indications. For Europe, this is a strategic investment in our partnership with India. The European Union is India's third most important trade partner, but we can do so much more. Our trade is far below our potential, both for Indian and European goods and services. So this deal will bring new technologies, new investment, an unprecedented integration into shared value chains. We are the two largest democracies in the world, and together we have a lot to give for the benefit of the people. Ladies and gentlemen, we are living indeed in a terra nova, as the title of this year's Raisina dialogue suggests. We all have to choose whether we want a terra nova to be wild, dangerous, and an unlivable place, or a better home for all humankind. I am convinced that democracies will have a crucial role to play in defining the world of tomorrow. I want Europe to be a partner for Asia in shaping this new world, a world of independent yet interconnected countries, working together for a more prosperous and peaceful world, working together for the benefit of humankind. Thank you very much for your attention. May I now request the Honorable External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, to propose a vote of thanks. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, President von der Leyen, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to propose the vote of thanks at the inaugural of the 6th Raisina Dialogue. In 2015, Prime Minister, you gave us the task of creating a Make in India, Make for the World platform to debate contemporary issues. This reflected both your confidence in shaping the global agenda, as well as in the strength of our summoning powers. It would express both the rebalancing and the multipolarity that characterizes our times. This dialogue has been the most successful
of our many responses to your call. 7 years later, we have today in our midst 1,200 participants drawn from 99 nations, ready to hear 100 panels and conversations. And I can say this with all humility, that the Raisina dialogue is among the best in its class. Among the geographies that have partnered this endeavor as it developed, Europe has clearly stood out. It is therefore only fitting that the keynote address today should be delivered by President von der Leyen of the European Commission. She and Prime Minister Modi were the co-chairs of the 27+1 EU summit at Porto in May 2021 that has set new directions for our partnership. Her personal leadership was largely responsible for the impetus given to the initiatives designed to take our ties to the next level. These include an FTA, an investment agreement, and a geographical indications agreement. Earlier today, we announced the launching of the Trade and Technology Council as well. This coordination mechanism will facilitate our working together on expanded trade, on trusted technologies, and on security. The European Union has already articulated an Indo-Pacific and a connectivity strategy, respectively, that contributes to our convergence. Our climate action, digital, and other conversations are getting increasingly serious. And as we have heard, the EU is approaching global challenges with a much sharper strategic awareness. Indeed, these are the subjects of discussions at this very dialogue. Let me therefore conclude by thanking President von der Leyen for her very thoughtful address that has set the tone for our deliberations. Our collective appreciation, naturally, to Prime Minister Modi, who remains the inspiration for this dialogue. I recognize the commitment of the organizers, Observer Research Foundation, whose painstaking preparations are so visible, and I'm sure that you all equally applaud. And not least, I thank all participants and those who have joined us virtually for being part of this exciting journey. Thank you very much. So this brings us to the close of this inauguration session. I will request you all to remain seated. The Honorable Prime Minister and Her Excellency President von der Leyen will leave the room. We will open the doors at some point, but till then remain seated and please do not crowd near the door as we move out. There are dinners that you can join and you would have received invitations, and we'll proceed to those venues. Thank you very much, sir.
तो राइसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आपने उद्घाटन सत्र देखा। कुछ देर पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इस सत्र को संबोधित किया और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका धन्यवाद अदा किया और इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलते परिदृश्य में यूरोप एक मजबूत स्तंभ की भांति खड़ा हुआ है। ये अवसर भारत और यूरोपीय आयोग के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का है और इसमें आर्थिक, सामरिक और तकनीक के क्षेत्र मौजूद हैं। उन्होंने अपने सहयोग के लिए यूरोपीय अध्यक्ष का धन्यवाद भी अदा किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से साथ लड़ने का ये समय है। उन्होंने कहा कि 7 साल बाद 99 देशों के हजारों दर्शक इस समिट में, इस संस्करण में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया बनाने का जो सपना देखा था, राइसीना डायलॉग में उस सपने को पूरा किया जा रहा है। इससे पहले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नई दुनिया आपसी साझेदारी और आपसी सहयोग से आपस में बढ़ने की है। उन्होंने कहा कि आज एशिया तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पावर हाउस बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन प्रतिबंध लगाने से केवल हासिल कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि टेरानोवा यानी नई दुनिया में हम रह रहे हैं और अब हमें ये तय करना है कि हम इस नई दुनिया को कैसा बनाना चाहेंगे। हम इसे आपसी सहयोग से आगे बढ़ने वाली दुनिया बनाना चाहते हैं या फिर एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली दुनिया बनाना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं राइसीना डायलॉग 7वें संस्करण में कही गई हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इस सत्र को संबोधित किया और भारत के सहयोग के लिए उसे धन्यवाद अदा किया। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत दौरा, पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की हुई समीक्षा। राइसीना डायलॉग में अहम मुद्दों पर मंथन। भारत EU संबंध और राइसीना डायलॉग के मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ विशेष चर्चा। महाराष्ट्र में गरमाया हनुमान चालीसा विवाद। दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन में हुई सुरक्षा पर चर्चा। खेलो इंडिया से जुड़ी तमाम खबरें। दुनिया की हलचल पर भी नजर। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। केम छो बदा? मजामा? I have a strong connection with India, not only in the high school though, in my university years as well. I had a good number of Indian teachers.
there is a political commitment, very strong political commitment. And if you have seen, especially the last few years, I can say Prime Minister Modi has really championed traditional medicine, and he has taken it to a higher level. हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको, ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रायसीना डायलॉग 2022 का आज से आगाज हुआ है। 25 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा और इसको अगर समझने की कोशिश करें तो भारत द्वारा ये आयोजित बहुउद्देशीय संवाद का कार्यक्रम है जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक वैश्विक मुद्दों पर विचार, चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर मंथन का एक विचार विमर्श का एक मंच प्रदान करता है। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुई है। इसकी थीम की बात करें, इसकी परिकल्पना की बात करें तो टेरा नोवा, भावावेश, अधीर, संकटग्रस्त, इसे थीम माना गया है। टेरा नोवा का अर्थ होता है पृथ्वी या नई दुनिया। विश्व को नए नज़रिए से देखने की इस रायसीना डायलॉग के माध्यम से कोशिश की जा रही है। और जैसा कि अब से कुछ देर पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने भी कहा कि वो नई दुनिया कैसी होगी वो हमें तय करना होगा। वो आपसी सहयोग से आगे बढ़ने वाली दुनिया होगी या फिर एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली दुनिया। तो टेरा नोवा नई दुनिया की परिकल्पना जिसमें आपसी सहयोग से आगे बढ़ने की जो नज़रिया है उसको सामने रखा गया। और 6 प्रमुख विषय हैं इसके: लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारधारा, बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वाली वैश्विक व्यवस्था, वाटर कॉकस, भारत प्रशांत में अशांत ज्वार, समुदाय इनकॉर्पोरेशन, स्वास्थ्य, विकास और धरती के प्रति पहली जिम्मेदारी, हरित बदलाव, सामान्य अनिवार्यता, वास्तविकताओं को अलग करना, सैमसन बनाम गैलियत, लगातार और अनवरत प्रौद्योगिकी की जंग। तो ये तमाम विषय हैं जिन्हें केंद्र में रखकर विचार विमर्श किया जाएगा और बहुआयामी और बहुपक्षीय ये संवाद होने वाला है। और 90 देशों के 210 वक्ता इसमें शामिल होंगे जो विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखेंगे। और जैसा कि इसमें इसका विषय, इसकी परिकल्पना, इसकी जो मुख्य थीम है कि नई दुनिया कैसी होगी, टेरा नोवा, नई धरती, कैसे उसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी आधारशिला रखी जाए, उसी पर अब से 25 से 27 अप्रैल तक इस रायसीना डायलॉग में विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें, कब से शुरू हुआ तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों के संवाद का ये कार्यक्रम है। बहुआयामी, बहुपक्षीय कार्यक्रम है जिसमें कई पक्ष शामिल होते हैं। एशियाई एकीकरण, विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय की कोशिश इसका लक्ष्य है। इसके अलावा 2017 की अगर बात करें तो द न्यू नॉर्मल, बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता, ये 2017 की थीम थी। और 2018 की थीम थी विघटनकारी संक्रमण का प्रबंधन, विचार, संस्थान और मुहावरे। तो लगातार परिकल्पनाएं, थीम्स बदलती रही हैं लेकिन उद्देश्य एक है, सहयोग के आधार पर आगे बढ़ती दुनिया। द वर्ल्ड रीऑर्डर, न्यू ज्योमेट्रिक्स 2019 की ये थीम थी। और 2020 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 2021 की थीम की बात करें तो वायरल वर्ल्ड, आउटर ब्रेक, आउटलायर्स, आउट ऑफ कंट्रोल। और अब टेरा नोवा, भावावेश, अधीर, संकटग्रस्त, ये थीम इस बार रायसीना डायलॉग की रखी गई है। तो रायसीना डायलॉग से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आप देखते हैं धारावाहिक बालकृष्ण। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र।
देखिए बालकृष्ण के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर रविवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक कोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र, देखिए कोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फिर से शुरू होने वाले हैं और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और अपने सभी फैंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डीडी स्पोर्ट्स पर 24 तारीख से जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, महत्वपूर्ण आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की बेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में जिन्होंने दूसरों का हाथ थामने का दिखाया जज्बा, साधारण लोगों की असाधारण हिम्मत की कहानियां, हौसले की कहानियां जो आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान ला देंगी आपको उम्मीद की किरण। मिलिए असल जिंदगी के नायकों से, मेरे यानी कि जया सिन्हा के साथ और मेरे यानी शहला निगार के साथ। देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फिर से शुरू होने जा रहे हैं और मैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं और साथ में आप सभी से विनती करता हूं कि डीडी स्पोर्ट्स पर 24 तारीख से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जरूर देखें। प्रधानमंत्री संग्रहालय tells you the story of the rise and rise of Bharat. इन परीक्षण के साथ
भारत छठी औपचारिक परमाणु शक्ति बन गया। Indira Gandhi's tenure as Prime Minister, just as we talk of bank nationalization. प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। The heroes of Kargil, this is the soil and rock from the Tiger Hill of Kargil. This is the journey of India since independence. And if you look at it, you realize where were we and where we are now. Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन संघर्ष के थमने का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आज इस संघर्ष का 61वां दिन है, लेकिन जो हालात हैं उससे यही लगता है कि यह संघर्ष अभी और खिंचने वाला है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से पहली बार अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया है, जिससे अमेरिका ने यूक्रेन को और ज्यादा सहायता देने की बात साफ तौर पर फिर से दोहराई। उधर रूस भी यूक्रेन पर और ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। क्या है इस वक्त मौजूदा हालात यूक्रेन में और अब यहां से आगे कैसे बढ़ेगी बात, इस विषय पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा अपने इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान के साथ। इसके अलावा भी दिखाएंगे आपको क्या है आज 61वें दिन के यूक्रेन के जमीनी हालात। तो वो रूस के यूक्रेन के बाद से अमेरिका के किसी बड़े नेता के रूप में पहली बार कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री का यूक्रेन दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देने की बात को फिर से दोहराया है, तो रूस पर और ज्यादा अमेरिका हमलावर नजर आया है। इस दौरे के बाद से जब रूस यूक्रेन में और ज्यादा तल्खी नजर आ रही है, कैसे ये तमाम घटनाक्रम हुआ, देखिए खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कीव में विदेशी मेहमानों का ये सबसे हाई प्रोफाइल दौरा था। अतिरिक्त सैन्य सहायता का आश्वासन लेकर अमेरिका के 2 टॉप मंत्री यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कई देशों के नेताओं की मेजबानी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कीव दौरा अलग ही सांकेतिक महत्व रखता है। अमेरिकी मंत्रियों ने वादा किया कि यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के क्रम में आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। जल्दी ही अमेरिकी राजदूत कीव में फिर से कार्यभार संभालेगा। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति स्नेह और आभार जताते नजर आए। हम आपकी वजह से यहाँ आए हैं, आपके असामान्य साहस की वजह से, उस नेतृत्व की वजह से जो आपने दिखाया और रूस की आक्रामकता का सफलतापूर्वक सामना किया है। हम यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम आपको हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए यहाँ हैं। आपने इसका सबूत भी देखा होगा, जैसा कि हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतिरिक्त सैन्य सहायता की घोषणा भी की है। आपको पता होना चाहिए कि हम आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे। देश के ऐसे आपात समय में आपको कीव में देखकर हम बहुत खुश हैं। हम उस सच्ची सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। मैं निजी रूप से राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूँ। पिछले कई दिनों से अमेरिकी मीडिया में चर्चा थी कि कोई उच्च अमेरिकी अधिकारी कीव का दौरा कर सकता है। अमेरिका के 2 आला मंत्रियों का दौरा यूक्रेन को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की ओर से मिलने वाले समर्थन का प्रतीक भी है। ये दोनों मंत्री पोलैंड से रेल मार्ग द्वारा कीव पहुंचे
और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ लंबी बैठक की। मुलाकात के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन चर्चा 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली। यूक्रेन से लौटकर अमेरिकी मंत्रियों ने पोलैंड में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी सहायता उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक यूक्रेन को जीत नहीं मिल जाती। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन जीत सकता है, शर्त यह है कि उसे उचित हथियार मिलें। हमें लगता है कि अगर उनके पास सही उपकरण और उचित सहायता हो तो वो जीत सकते हैं। हम उनकी हर वो सहायता करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें इसकी आपूर्ति होती रहे। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को पिछले कुछ सप्ताह के दौरान बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। अभी तक अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए घोषित सैन्य सहायता लगभग 3.7 अरब डॉलर की है। इस सहायता से यूक्रेन को अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। तो अमेरिका ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है किस तरीके से यूक्रेन को लगातार मदद जारी रहेगी। क्या कुछ बड़ी अमेरिका की ओर से मदद का भरोसा दिया गया है और अभी तक अमेरिका ने किस प्रकार से यूक्रेन की मदद की है सैन्य सहायता